Is it worth taking a drop year for SRCC? Reality about placements and package. Is DU worth the hype? I think it's the best decision ever. Is SRCC really toxic? ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में छोटी मोटी बातें तो चलती हैं. कोर्स ओवर कॉलेज और कॉलेज ओवर कोर्स कि मेरी कोई ना कोई क्लास हमेशा कैंसिल हो जाती है. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I know most of you guys watching my videos are either in Delhi University or are planning to get admission in Delhi University. So आज ही मैंने अपने Instagram पे और community post से पूछा था some questions or assumptions that you have about Delhi University और SRCC specifically, and I got a lot of them. So इस वीडियो में मैं उन सारे questions assumptions को answer करने वाली हूँ to find out कि जो भी तुम अभी तक सोच रहे हो क्या वो सही है या नहीं. By the way, I'm currently in Solan, Himachal Pradesh, and views तो बहुत ही मस्त है, हवा भी मस्त चल रही है. अभी यहाँ पे एक बंदर भी आया हुआ था, होपफुली अब नहीं आएगा. बट या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो. ओके, फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल द क्वेश्चंस जो उन बच्चों के थे जो अभी CUET दे रहे हैं. अ लॉट ऑफ यू ऑल वर आस्किंग मी कि क्या कॉलेज की क्या कट ऑफ जाएगी. सो गाइस, उसके लिए तुम पास डेटा देख सकते हो. अभी सिर्फ CUET 2 बार हुआ है, सो यू कैन सी कि कौन सी कैटेगरी की यूजुअली कितनी कट ऑफ जाती है फॉर हर कॉलेज. इट यूजुअली रिमेन्स सिमिलर, बट ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड दिस इज आल्सो द सेकंड क्वेश्चन दैट केम कि इस बार इंग्लिश का एग्जाम में बहुत इश्यूज हुए हैं एट दी सेंटर. सो लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया था. सो यस, अगर सबका एग्जाम बुरा गया है दैट मीन्स इट विल अफेक्ट द कट ऑफ स्कोर. बट इफ इट्स जस्ट अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली द कट ऑफ्स माइट नॉट रिड्यूस दैट मच. बट एट द सेम टाइम बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, सो इफ इट वाज अ स्लॉट वाइज प्रॉब्लम देन दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन द नॉर्मलाइजेशन. सो या, जस्ट होप फॉर द बेस्ट. ओके, आई हैव द क्वेश्चंस हियर विद मी ऑन माय iPad. द फर्स्ट वन इज रियलिटी अबाउट प्लेसमेंट्स एंड पैकेज. आई थिंक ये SRCC के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा होगा बिकॉज SRCC जस्ट बोस्ट अबाउट कि हमारी इतनी प्लेसमेंट गई है, दिस इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट, all our students are placed, and yes, to an extent that is extremely true कि SRCC की placements अच्छी होती है. I think majority of the batch is placed as of now. Yes, in our batch specifically थोड़ा सा package कम है because recession is going on, but otherwise जो हमसे next वाला batch है उनके काफी अच्छे internships भी लगे हैं already in like big companies like Bank of America, some airlines and what not. So yes, definitely placements are good. Now talking about Delhi University in general, let's be honest, जो अच्छी placements on campus प्लेसमेंट्स लगती है वो तो आई थिंक सिर्फ टॉप 5 या मैक्स टू मैक्स 10 कॉलेजेस में लगती होगी अच्छी प्लेसमेंट्स, एंड बाकी में अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं आती है. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक LSR, मिरांडा हाउस, SRCC, हंसराज, हिंदू, वेंकटेश्वर, इन सब में आई एम श्योर प्लेसमेंट्स अच्छी लगती है. बट यस, दूसरे कॉलेजेस में देयर इज नो गारंटी इफ यू आर गोइंग टू गेट एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट. सो मोस्ट स्टूडेंट्स यूजुअली ऑप्ट फॉर अदर थिंग्स, या तुम ऑफ कोर्स ऑफ कैंपस लिंक्डइन वगैरह पे भी प्लेसमेंट्स ले सकते हो. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Is it worth taking a drop year for SRCC? I think it really depends and it's extremely subjective. अब देखो, अगर तो तुम्हें top 5 या 10 colleges of Delhi University में admission मिल जाए, then it is absolutely not worth wasting another year for getting SRCC. Because देखो, eventually placements वगैरह या the opportunities you get in top colleges में अच्छी होती हैं. But if I talk about the maybe off-campus colleges or the not so good South Campus colleges, yes, वहाँ पे you can consider taking a drop year for SRCC. But again, that depends on your end goal only. देखो, SRCC is known for its placements, and if that is your only goal कि यार तुम्हें तो बस कॉलेज खत्म करते ही जॉब करनी है for whatever reason that is, then obviously SRCC or any of the top DU colleges is a very good option for you. But अगर हो सकता है कि तुम्हें कोई entrance exam की तैयारी करनी है, let's say UPSC देना है तुम्हें, या तुम्हें CAT का एग्जाम देना है, MBA करना है आगे, और if you have other good options available, then SRCC के लिए drop year लेने की कोई जरूरत नहीं है. यार देखो, it is true that your college really matters, but not to the extent you want to waste your time. देखो, if you are good enough, if you're capable, if you have good ideas, if you have the dedication and commitment, तो तुम चाहे किसी भी कॉलेज में हो, you will make the most of your time there, और तुम अपनी दूसरी skills को use करके कुछ बड़ा करोगे लाइफ में. Just because they're an SRCC student doesn't mean कि उनकी लाइफ sorted है. Yes, you get an upper hand obviously अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो, but again, if you are good enough, then you will get opportunities anyway. Next one is, are people a little mean or self-entitled? I think तुम्हें हर टाइप के लोग हर कॉलेज में हर जगह पे मिलेंगे, so you can't just point it out to Delhi University obviously, but of course you have to choose the kind of people you want to hang out with, जिनके साथ तुम्हारी vibe match होती है, तुम्हें उनके साथ मजा आता है to hang out with them, your mentality matches and you guys are on the same level of thinking, then you just hang out with those people. तुम्हें ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है. You can completely avoid them in college and it's very easy.
easy. हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता है कॉलेज में, and I think most college students need to realize that having no friends is better than having 10 friends like these. If you have a tight knit friend circle of even 3-4 friends, trust me, it is more than enough to get you through your college life. Okay, the most popular question पूरे Q&A में is, do you worth the hype? यार ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, स्पेशली मैं जब SRCC में पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी. नाउ इट्स लाइक जो चीज तुम्हारे हाथ में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती तुम्हें. सो येस, इट रियली अगेन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड योर गोल्स. आई एम नॉट गोइंग टू से दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द अल्टीमेट थिंग. यार ऑनेस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस एक्चुअली वर्थ हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू है. लाइक SRCC की ब्रांड वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट्स अमेजिंग. इट्स नॉट लाइक SRCC में कोई चांद तारे तोड़ के तुम पता नहीं कुछ बड़ा उखाड़ लेते हो. नॉट एट ऑल. लाइक तुम कहीं बाहर जाके किसी को बोलते हो कि आई एम एन SRCC स्टूडेंट, यू डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. आई थिंक दैट इज इनफ. तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द हाइप दैट्स वर्थ इट. बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड फैकल्टी बहुत अच्छी मिलने वाली है, या बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी सबको, या तुम्हें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, देन इट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन. अगेन कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटीज एज वेल. यस, SRCC में ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर एक्सपोजर बिकॉज यू कैन डू इंटर्नशिप्स इन गुड कंपनीज, यू कैन वर्क विद सिमिलर माइंडेड पीपल who are obviously smarter than maybe most of the average people. So that way, yes, getting into the top college of Delhi University is definitely helpful. But otherwise, if you have a better option, then you should go for that. But I understand काफी लोगों के financial constraints भी होते हैं, so they want a government college. Then obviously Delhi University is worth it in that sense, and it always comes down to what you can make of the opportunity given to you. Yeah, just because you're in some off-campus college doesn't mean कि तुम्हारी life बेकार हो गई है. तुम अभी भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो लाइफ में, तुम स्टार्टअप कर सकते हो, you can be an entrepreneur, whatever the case may be. So obviously Delhi University के अपने pros and cons दोनों हैं. It's you who has to decide कि क्या Delhi University जाना सच में worth है या नहीं. Now when you ask me about my experience at SRCC also, obviously I've met the most amazing people at my college. I've worked on so many different projects with like big companies. I've worked in Dabur, HCL as a part of the marketing society. I've hosted so many major events in college. So that's the kind of experiences you get in colleges like SRCC. And these are the experiences जो तुम हमेशा अपनी लाइफ में याद रखोगे. And I think that's what really makes Delhi University worth it. But of course सरकारी कॉलेज है तो एडमिन रिलेटेड चीजें तो बहुत ही मेस्ड अप है. जैसे एक साइन करवाने में पता नहीं हफ्तों लग जाते हैं. So things like that are very normal. But as a student तुम चला लेते हो यार, because other things are so much better. Okay, another question I think ये outstation वालों के लिए ज्यादा concerning होगा. Is it safe for girls? देखो majorly college तो safe ही होता है. I mean there are a lot of restrictions and rules in the college itself. Like ragging भी नहीं होती है in most colleges unless internally तो किस कॉलेज में क्या हो रहा है आई कांट कॉमेंट, लेकिन SRCC में तो नहीं होता है. एंड अगेन एज आई सेड, देखो हर कॉलेज में हर टाइप के लोग मिलते हैं तुम्हें. इट्स यू हु डिसाइड्स हु टू हैंग आउट विद मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड दिल्ली तो दिल्ली रहेगा, इसलिए सेफ्टी फॉर गर्ल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंसर्न. ओके, दिस वन आई लव. इज SRCC रियली टॉक्सिक? नाउ इफ यू गो टू एनी SRCC स्टूडेंट दे आर गोइंग टू से यस, बिकॉज यार तुम इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में थ्राइव कर रहे होते हो. अंडरस्टैंड लाइक देयर आर 1000 स्टूडेंट्स स्टडीइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग एंड यू guys are fighting for the same societies, you're fighting for the same placements, the same packages, the same opportunities. So imagine the kind of pressure it has on everyone, because everyone wants to succeed in life, right? That's the reason SRCC gets toxic, because तुम्हें बहुत ज्यादा competition face करना पड़ता है. But at the end of the day, if you have the right set of people around you who are there to support you, like my friend group is extremely supportive. हमारा आपस में बिल्कुल भी कोई competition नहीं है. We're so happy for each other. सबके अपने अपने goals है life के that everyone is achieving, which is awesome. And then उसके बाद तो तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स से कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए. You just have to focus on what you want to achieve in life and just work towards your goals. बाकी जो भी noise हो रहा है, you just have to ignore it and cut it out completely. Okay, the next question is, there's an MBA course available in SRCC. Is it good as compared to the top IIMs? So yes, SRCC का भी एक sort of MBA course है, that is the GBO, the Global Business Operations. Very small batch size, I think 100 students के around ही होंगे. Now obviously IIM जितना अच्छा तो नहीं होगा, because IIM is the it college for MBA, right? But of course, if you can't get into the IIMs or any other top colleges that are for MBA, then GBO is definitely a good option to consider, because you get the brand name of SRCC, you get good placements as well, and तुम्हारी MBA degree भी हो ही जाती है. So again, depends. You can check out the course and stuff to see if it's actually worth it. Okay, a very broad question. What is the future of SRCC students? The amount of opportunities you get, that means कि तुम literally कुछ भी कर सकते हो. You can be a startup founder,
founder, you can be a YouTuber, you can of course go for a job, get a good placement, you can go for an MBA, you can do CA or CS alongside, or any other professional course for that matter. For example, ACCA, CFA, CMA. You can go for the government exams like UPSC or the bank PO exams. So of course there are so many things that you can do. It really depends on your interest and passion. Okay, another funny one, classes get cancelled. Yes, of course, मैंने हर vlog में literally बताया कि मेरी कोई ना कोई class हमेशा cancel हो जाती है. So that way Delhi University का काफी chill scene है, and honestly I don't mind that. यार अच्छा है, college chill ही होना चाहिए. Why should I have the burden of attending all the classes all the time? तो अच्छा ही लगता है जब बीच में classes cancel हो जाती है, थोड़ा सा break मिलता है. It's always a good feeling. Is the attendance compulsory in Delhi University? Yes, now because of the NEP rule, it's gotten quite strict. Right now for our batch, attendance was not strict until 2 years back. लेकिन इस साल बहुत ही strict कर दिया. Especially the students who got placement, उनको बोला कि 75% attendance करनी पड़ेगी. But on the other hand, I have so many friends who are in different colleges like Daulat Ram, etc. उनको कोई pressure नहीं था अपना 75 even 66% attendance maintain करने का. So really varies from college to college in Delhi University as well. But yes, I've heard because of the NEP, the new education policy, it's gotten quite strict and एक minimum 66% तो चाहिए ही होता है. Your subjects are more, classes भी शाम को 5 बजे तक चल रही होती हैं, which is insane I think, but अब क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा. It's Delhi University. Okay, another one I love, बहुत चक्कर कटवाते हैं हर छोटी चीज में. It's so hectic. Yes, absolutely true. अभी हमें clearance form sign करवाना था for getting our admit card for the last semester के exams, and oh my god, the chaos we had to get a sign from the cashier. लोग चढ़ गए एक दूसरे पे, stampede हो रहा है. It was crazy like that. So yes, as I said, सरकारी कॉलेज है तो ये सब चीजें तो होती रहती है. ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में छोटी मोटी बातें तो चलती हैं. Okay, the next question is, if someone enters in college through sports quota, then they will have to continue with sports. So yes, as far as I know, जो भी sports quota से enter होता है, at least in the first year they have to mandatorily come to practice as well, and they have to be involved in sports. And I think अगर sports related subject होता है तो वो भी लेना पड़ता है. But I think again, like the final year, there is no compulsion as such. But I think most sports students are part of the sports college team, and they do continue with their sports anyway. Okay, another question जिसपे मैंने भी बहुत ज़्यादा debate किया था when I was taking admission in Delhi University. So choosing one course over college or college over course, it gets very subjective, but I would still suggest going for a college over a course if the college is really good enough. अगर वो top 10 DU colleges में आता है, then please choose the college over the course any day. But I don't mean to say that you take any course that you get, like maybe let's say Sanskrit honors जिसमें तुम्हें कोई interest नहीं है. Don't go for something like that. I think humanities students के लिए काफी relevant हो जाता है that if you have an option between psychology honors, sociology honors, English honors, etc., and you're getting one of the courses in Miranda House, then you should obviously go for the college any day. Same time पे eco honors and BCom honors तो मेरा issue आया था. I switched from eco to BCom and took SRCC, and I think it's the best decision ever. So yes, अगर ऐसा कुछ dilemma होता है, then obviously go for the top colleges of Delhi University. But again, जैसा मैंने starting of the video में ही कहा था, after the top 10-15 colleges of Delhi University, सारे colleges बराबर हो जाते हैं, to be very honest. तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Then you can obviously choose a course that's more relevant to you, you're more interested in, and उसके शायद future prospects भी better है. So just go for that. Okay, is it really difficult to survive academically in SRCC? As said by a lot of seniors, I don't think so. Absolutely not. The course I'm studying, BCom honors, it's literally so easy to say the least. And again, just because SRCC है तो course कुछ बदल नहीं जाता है. सारी colleges of Delhi University में same course and same study material पढ़ा रहे हैं. So it can't be tougher academically, not at all. Yes, obviously eco honors tough है, इसलिए बोलते होंगे कि यार बहुत मुश्किल है SRCC में survive करना. But again, that is a course problem, not a college problem. How to balance studies and college life? यार, I think once you enter college, it gets a lot more easy. First 6 months थोड़ा सा adjust होने में time लगता है. अभी तुम school से आए हो, the environment is so different, you're meeting so many different people, you don't realize who's actually good and honest, जिनके साथ तुम hang out करना चाहते हो. So starting में it gets a little overwhelming, but after a point you realize your priorities, the people you want to hang out with, the kind of things you want to be involved in college, उसके accordingly तुम सब आराम से manage कर लेते हो. You know, जब exam season होता है तुम सिर्फ पढ़ाई पे focus करते हो. Otherwise most people are just chilling and enjoying their college life. A lot of people prepare for entrance exams, तो उसकी भी तैयारी side by side चल रही होती है. So of course there's a lot happening in college life, but that's the fun part. इतनी सारी मस्त चीजें करने के लिए मिलती है.
So यार, it just comes down to your priorities and time management. सब कुछ sort हो जाएगा. What's the highest package of SRCC? As far as I know, I think 30 lakhs highest package है given by Blackstone to like one person. And I think second highest HUL का package होता है. 2 students got a PPO actually. So good for them. वो भी almost I think 25-30 lakhs के around ही था. So that's usually the range of the highest package. Okay, many of you asked advice for first years who will be joining DU and what all did I learn while being a part of SRCC, my experiences, my learnings. So guys, I'll be making a separate video telling you guys about all the real tea on college life and how you should make the most of it. So don't worry, a video will be coming really soon. So subscribe if you haven't, because what are you doing? And of course, अगर तुम्हें ऐसी videos का part होना है, then make sure you follow me on Instagram and subscribe, क्योंकि यहीं पे मैं तुमसे questions लेती हूँ and only subscribers के questions answer होते हैं. But yeah, anyway, that's a wrap. मैंने काफी ज्यादा बातें कर ली है तुमसे, but I think this video was the most honest and raw video I wanted to make for y'all. अभी मेरा college खत्म हुआ है. I just graduated, farewell मिला हमें. It's crazy. 3 years have passed and you guys have stuck around for so long. So I'm so glad that you guys were here. Thank you so much. But don't worry, आगे भी बहुत कुछ exciting and crazy होने वाला है. So stay tuned for all of that. Oh my god, बहुत तेज हवा चल गई guys. Video को सही time पे end करा है. So yeah, if you made it till here, then comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram and until next time, bye.